तो नीचे गिरने का जो एक्सेलरेशन है, हम्म। ठीक है ना, हम्म। वो रहेगा, वो प्रॉपर्टीज है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन है, नॉट की सो फोर्स यू है आर वो। जी सेइंग कि हर एक चीज़ को जब छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगा। जी, अगर उसमें साइड में कुछ और मीडियम नहीं है, अगर मीडियम वैक्यूम कर देगा तो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आपको क्यों लगता है ऐसा? गैस तो हर तरफ जाता है ना, गैस नीचे थोड़ी जाता है। कोई भी गैस नहीं ले लो, आप, कोई भी गैस ले लो। अगर मान लो आप पानी भी उबाल रहे हो तो उसका जो ऊपर में स्टीम बन रहा है, गैस बन रहा है, वो थोड़ी नीचे की तरफ जा रहा है, वो तो चारों ओर तो हवा में मिल जा रहा है, ऊपर जा रहा है वो तो। गैस का मैंने सोचा नहीं, मतलब कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट, मतलब सॉलिड के बारे में मेरा एक्सप्लेनेशन है। गैस के बारे में मैं ग्रेविटी को कुछ सोचा नहीं, गैस के बारे में। तो ग्रेविटी गैस क्या, के बारे आप जो ग्रेविटी बोल रहे हो वो सेलेक्टिव है, वो सिर्फ सॉलिड लिक्विड पे ही काम करता है, गैस पे काम नहीं करता है। तो ग्रेविटी का मतलब क्या है आपका? ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या आप समझ रहे हो फिर? एज ए सॉलिड सब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी का मतलब, सॉलिड सब्जेक्ट जो नीचे गिरता है, वो हाँ। एक एक्सीलरेशन गिरता है, ठीक है ना। ओके। वेलकम एवरीवन to this new episode, part 2 of Science 101, Lumberjack versus Numpty Flat Earthers। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिस्टर श्यामल दुलाई का लेटेस्ट अपलोड, Why Things Fall. The title of the video, I'm going to read this entire thing: Why Things Fall and Not Going Left Right. If Gravity is Hoax, Different Theories, Shankarshan. So this Shankarshan is Shamal Dulai's own idea, conception of a replacement for gravity, जिसके बारे में कि वो बात करते हैं। बट उन्होंने जैसा कि मुझसे बोला था कि ही वांट्स अ रेफ्यूटेशन ऑफ दिस वीडियो, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी टाइटल ऑफ द वीडियो, वाई थिंग्स फॉल, जिसका कि रिप्लाई मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में शॉर्ट एंड स्वीट रिप्लाई दे भी दिया था कि थिंग्स डू नॉट fall down. Define things. You've got to define things. Is a helium balloon a thing? Are clouds things? Or steam? Or any gas for that matter? Right? Are gases matter? Is gas matter? Yeah? Gases do not go down, go boom boom, like bouncy balls. As simple as that. That's the refutation of your argument. I rest my case. See you in the next video. There's the globe believers who are blissfully ignorant. Then there's us, who sleep quite soundly, although probably very poor. And then there's the anti-flat earthers, who have sleepless nights and stress and pain, and have to run around in circles, scratching each other on the back, telling them that weight gives them atmosphere, begging the question. It's like, atmo, air, sphere, sphere-shaped air. Air doesn't arbitrarily take the shape of a sphere. What's that? It goes down, go boom boom, towards the centre of the mass of Earth. No, gas definitely doesn't do that. How many farts have you seen fall to the ground and go into puddles? What's that? They spread throughout your house, making everyone realise how stinky and dirty you are? Yeah, that's right, they expand, don't they, gases? Even if there's other gases in their way. They might bounce off them and go down, but ultimately they'll just keep going in whatever vector they're travelling until they bounce off something, like a container, which would be required to attain the pressure. Pressure's it pressing? Can't press on a sky vacuum, it would expand into it. We'd all be dead. What's that? Wait. Gas go down, go boom boom. What, like weight of bouncy balls poured through air into a fish tank? No, gas doesn't do that, I'm afraid. There's no puddles of gas.